Hi, good morning, everyone. So, today the topic of our FB Life is myths and facts of pregnancy and labor. So, let's discuss about pregnancy myths because इतने सारे myths हैं ना कि आप ये खाओगे तो बच्चा गोरा होगा, ये खाने से बच्चा काला हो जाता है, और अगर आप नीचे झुक जाओगी तो बच्चा उल्टा हो जाएगा. So there have been so many myths that I have been dealing with, especially last trimester में अगर घी खाओगे तो डिलीवरी अच्छी हो जाएगी, दूध में घी डाल के खाओ. So we'll try to cover up few myths, and I would really like if there are any myths that you really want to ask a question from me also, then we can discuss that also. So first, let me go through some basic myths. As soon as I know I am pregnant, should I go on bed rest? Yes, no, don't know. So the question is, no, you don't need to go on a bed rest, but every case is individualized. You cannot just put a blanket statement to one thing, जैसे कि yes, you should go on a bed rest, or no, you should not go on a bed rest, because every case is individualized. Every person is different. क्या क्या रिस्क फैक्टर उनके साथ में है. हो सकता है उनकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हों शुरू में, जिसकी वजह से वी वांट देम टू बी ऑन बेड रेस्ट. सो सच पेशेंट्स आर कैन बी जिनके अंदर पहले कोई पेन्स वगैरह शुरू हो गई हो, या फिर उनको कोई ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो गई हो. इन सच केसेस वी नीड टू पुट देम ऑन बेड रेस्ट. अदरवाइज प्रेगनेंसी में एज सच देर इज नो इंडिकेशन फॉर बेड रेस्ट. आप आराम से यू शुड कंटिन्यू विद योर नॉर्मल एक्टिविटीज. जस्ट बी कॉशियस दैट यू आर प्रेग्नेंट, इसलिए यू नीड टू वॉक not briskly, and you should avoid रनिंग ऑल्सो, और कोई भी बहुत ऐसी एक्टिविटी नहीं करना है जिसमें बहुत हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज आर टू बी अवॉइडेड. अदरवाइज एवरीथिंग शुड बी परफेक्टली नॉर्मल. बहुत ज़्यादा स्टेयर्स ऊपर नीचे नहीं करना है. सो इफ़ यू जस्ट रिमेंबर दैट यू आर प्रेग्नेंट, यू विल बी केयरफुल. तो आप अपने आप को आराम से चलेंगे, एंड योर प्रेगनेंसी विल बी अनइवनफुल. It's only when you try to do many things together that you end up in a problem जहाँ पे आपको बेड रेस्ट रिकमेंड कर दिया जाता है. So the second question is, should I continue to work? I need to travel for work. Yes, you can continue to work, but ऐसे जैसे just because of the COVID times, work from home आजकल बहुत हो रहा है. So work from home में भी there are few things you need to keep in mind. एक जहाँ पे भी आप बैठ रहे हो, wherever you are going to do your work from on a laptop also, एक कंफर्टेबल चेयर पे बैठो, एंड अपने पास में प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स रखो. हर 2 घंटे में ट्राई टू ईट समथिंग. इट्स नॉट लाइक कि आप बस बैठे हो तो बस वो स्क्रीन टाइम ही यहाँ पे चल रहा है. एंड इफ इट्स पॉसिबल एवरी 1 आवर के अराउंड पे ट्राई टू मूव अराउंड. थोड़ी देर आप यू नीड टू मूव अराउंड. ऐसा सिर्फ बैठे रहने से भी देयर कैन बी क्लॉटिंग इन लेग्स, लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है फीट में. एंड इफ यू फील आपके पैरों में स्वेलिंग हो रही है तो आप नीचे एक स्टूल रख सकते हो पैरों में, ताकि वो आपके लिए थोड़ी ईज ऑफ कर दे. People who need to travel to work, they can travel to work, but then obviously अपने जितने टाइम का नॉर्मली आपको टाइम लगता है टू रीच योर प्लेस, आई वुड सजेस्ट उससे ज़रा 10-15 मिनट पहले यू शुड ट्राई टू मूव फ्रॉम योर होम, बिकॉज आराम से जाइए. ठीक है, कोई ऐसा रश से नहीं. इफ़ यू आर ड्राइविंग योर सेल्फ, और इफ़ यू आर गोइंग बाय कैब ऑल्सो, कैब वाले को बोलो आराम से चलाए, and try to avoid potholes. And अपने साथ में similarly you need to carry plenty of fluids. Don't be bothered about कि अगर मैं बहुत ज़्यादा फ्लूइड लूँगी तो मुझे बहुत जल्दी कहीं बाहर में वॉशरूम जाना पड़ेगा. That's a separate thing. But if you think you're going to avoid washroom, public washroom, just because to restrict your drinking, that's the worst thing you're going to do. एक the water which is required in pregnant females and even the lactating ones, the water requirement is more than the normal people around her. बिकॉज आपका जो वाटर है वो आपके ब्लड में भी जा रहा है, ब्लड स्ट्रीम में भी जा रहा है, बेबी को भी जा रहा है. सो योर वाटर रिक्वायरमेंट्स, योर लिक्विड रिक्वायरमेंट्स आर मोर. सो अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट करोगे, यू विल एंड अप हैविंग, एक तो खुद को डिहाइड्रेशन होगा, डिजनेस होगा, लेग में क्रैम्प्स होगा, बाय इवनिंग आपको लगेगा मुझे बहुत लाइट हेडेड फील हो रहा है. प्लस आपको यूरिन इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. कॉन्स्टिपेशन इंक्रीज हो जाती है इफ यू रिस्ट्रिक्ट योर फ्लूइड. सो while traveling try to carry water, या you can carry a lemonade also with you, उसको बीच में सिप करके पीते रहिए. प्लस सिमिलरली विद एज आई मेंशन इन वर्क फ्रॉम होम ऑल्सो, थोड़ा जो खाना है वो भी आपको लेते रहना पड़ेगा, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हार्ट बीट गिव्स अवे बॉय और गर्ल.
Oh, that's the sweetest myth. So, but I really like to burst that one. Heartbeat cannot predict it's a boy or a girl. You have to understand. Heartbeat का range मुझे बहुत patients ने बोला and I literally had to Google because I didn't know myself कि ये क्या myth है. So they used to tell me कि 140 से नीचे heartbeat अगर मैम हमारे बेबी की आ रही है तो boy है, 140 से ऊपर आ रही है तो girl है. There is nothing like that. It's you have to understand the basic principle. Heartbeat ज़्यादा और कम क्यों हो रही है? अगर आप आराम से बैठे हो, योर रेस्टिंग हार्ट रेट माइट बी अराउंड 60-70, बट while you're walking your heart rate can increase to 80-90, and if you're running your heart rate goes to 130-140. Similarly, in a baby the range of heart rate is from 110 to 170. So 120 30 40 पे वो कंफर्टेबली अपना वॉक कर रहा है कंफर्टेबल पोजीशन पे, बट जब वो मूवमेंट करेगा वो इज किकिंग तो उसका हार्ट रेट माइट गो टू 160. So that's perfectly okay, and we cannot monitor a heart rate 24 hours. And I would say it's a very good thing अगर किसी टाइम पे 120 आ रहा है, अगली बारी 140 50 आ रहा है, because some patients get bothered also कि last time तो 120 आ रहा था, 130 आ रहा था, अब हमारा 150 क्यों हो गया? You have to remember it's a good sign because वो उसका हार्ट जो है वो उतनी मूवमेंट्स पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, इट्स वर्किंग परफेक्टली. सेम हार्ट रेट पे सब चीजें एक्टिविटी नहीं हो सकती ना रेस्टिंग चल सकता है ना मूवमेंट्स हो सकती हैं. So really sorry to burst that thing, but you cannot judge it's a boy or girl from heartbeat. Eat for two when pregnant. Yeah, that's also one thing we need to understand. There is nothing like that. Eat for two. It has to be a balanced meal, and there are few caloric requirements that you need to eat, बट नॉट लाइक केक्स, जैसे इसमें केक एक तरफ में है और एक तरफ में फ्रूट्स हैं. सो इन केसेस में जो है वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपकी रिक्वायरमेंट्स आर इंक्रीजिंग, योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज इंक्रीजिंग, योर vitamin requirements are increasing, your iron requirements is increasing. So उनको हमें compensate जरूर करना है, but it's not like कि आप एक का खा रहे थे तो आपने दो खाना शुरू कर दिया. That will keep you more bloated, आपका weight gain ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, and you might end up diabetic also. इतना अगर मीठा और ये सब चीज़ें आपकी ज़्यादा होगी, if your weight increases that much. So no, I would say no for that, not for eating for two people. Kesar makes the baby have fair skin. As I was mentioning at the start of the talk, कि yeah, this is one thing. लोग मुझे पूछते हैं केसर से बच्चा गोरा होगा. बच्चे के जीन तो पहले ही डिसाइड हो गए. The day you conceive, उसका क्रोमोसोम सेटअप बन गया, उसके हिसाब से उसने बनना है, वो आप दोनों के हिसाब से बनेगा. So उसमें फेयर स्किन होगा नहीं होगा, that cannot be the work of केसर. It's like if you want a healthy and a happy baby, you need to have a happy lifestyle. Happy lifestyle, it's like आप सुबह meditation करो, you need to calm yourself, healthy food खाओ, have plenty of fluids, and you need to have a good mood at all the time. अगर आप सारा time, if that's definitely there, if you're cribbing so much or if you're sulking so much, it is definitely going to affect the baby. Why? Because वो आपसे सुन रहा है. देयर इज अ वे 4th-5th मंथ पे तो देयर आर स्टडीज कि 5th मंथ के बाद तो बेबी आपकी बातें भी सुन रहा है एंड उसको कुछ ना कुछ आपसे चीजें मिल रही हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू काम योरसेल्फ, गो विद द फ्लो एंड एंजॉय योर प्रेगनेंसी. इफ यू आर हैप्पी, द बेबी इज गोइंग टू बी हैप्पी. और एनी हाउ बेबी कब अच्छे लगते हैं? रोते हुए बच्चे चाहे गोरा हो चाहे ना हो, नहीं अच्छा लगता है. सो हंसता हुआ बच्चा ही अच्छा लगता है. सो फॉर दैट यू नीड टू रिमेन हैप्पी. So, but otherwise, you like kesar, you can have kesar wala milk, you can have a chocolate wala milk. That doesn't make a difference. Heartburn means baby has lots of it. That's interesting, but I haven't heard of that before. But it cannot be. You have to understand baby कहाँ है? Baby is in uterus. Uterus में भी एक sac के अंदर है, and uterus कहाँ है? आपके abdomen में है. तो उसके हेयर जाके आपको हार्ट बर्न कैसे कर देंगे एसिडिटी बच्चे के हेयर से? सो इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स ओनली बिकॉज यू हैव हार्ट बर्न बिकॉज इफ यू आर नॉट ईटिंग एडिक्वेटली, आप किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा खा रहे हो. बिकॉज प्रेगनेंसी में डाइजेशन इज डेफिनेटली स्लो डाउन, सो आपको ब्लोटिंग हो रहा है, एंड स्पेशली इन द लेटर मंथ्स बिकॉज द स्टमक कैपेसिटी इज सो मच रिड्यूस्ड कि वो ब्लोटिंग टेंडेंसीज आपको उसकी वजह से हो रही है. वो आपको हार्ट बर्न कर रहा है, आपको एसिड रिफ्लक्स कर रहा है, जिसकी वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ बेबी हैज लॉट्स ऑफ. ईटिंग पीनट्स विल मेक द बेबी एलर्जिक.
So eating peanuts cannot make the baby allergic, but if you are allergic to peanuts, then the baby can have allergy, because that's the thing with genes. And it can be genetically that the baby can be allergic, because अगर आप दोनों में से कोई भी allergic है तो उसमें हो सकता है, but आपके peanut खाने से baby को allergy हो जाए, not explainable, it cannot be. So pregnant women should avoid exercise. That's the biggest myth, and you have to understand, as I was telling you early, pregnancy may exercise. I have to be individualized. You cannot just similarly, you cannot just put a blanket statement to every patient कि आपको exercise करना है. In few patients, we don't advise them to do much of physical activity, but in a normal pregnancy, you should exercise. आप खाना खाने के बाद सुबह शाम if possible half an hour walk करिए. धीरे धीरे the walk can become a brisk walk also. थोड़ी stretching करिए, arms की, legs की stretching करिए. If possible, you can do a yoga also. Stretching exercises में back के लिए बहुत important है अगर आप करते हैं, because back is going to have a load जैसे जैसे आपकी pregnancy आएगी, and you might have start having a low backache and all the other problem. So for that it's important that you should exercise. आप अगर नहीं एक्सरसाइज करेंगी, the excess weight gain can cause एक तो आपको difficulty in labor, आपको मसल्स नहीं प्रॉपरली सपोर्ट कर पाएंगे ड्यूरिंग लेबर पेन्स, प्लस बेबी का वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सो इट विल बिकम अ डिफिकल्ट लेबर. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू नीड टू एक्सरसाइज. If doctors tell me the water around baby is less, I should drink lots of water. This is also an interesting thing, because suppose that the patient is having vomiting or is having loose motions, diarrhea. In these cases, we do advise drink lots of water, because we have to replenish her water stores. And definitely, if a patient जिसको बहुत ज़्यादा vomiting और diarrhea उस टाइम पे है, अगर if we do a scan at that time, ultrasound scan at that time, definitely the water level around baby would have gone down. And जैसे ही mother का stores will be replenished, उसका water intake better हो जाएगा. But usually water around baby, if the patient doesn't have any of the problems that I've mentioned earlier, is usually it's a very early sign of कि baby को nutrition proper नहीं मिल रहा, उसको protein supplementation proper नहीं मिल रहा. So there is some problem, either the intake of mother is less or the absorption is the problem, कि absorb नहीं हो रहा जितना वो खा रही है. So उसमें lots of water will not help, उसमें lots of protein might help. So you have to consult your doctor accordingly कि क्या protein forms वो आपको subscribe कर सकते हैं इस time period पे. Whatever I eat goes to the baby. When I'm breastfeeding, if I eat spicy food, my baby will get acidity. So whatever I eat goes to the baby is, I would say, a very subjective statement. I will not say no and I will not say yes. Because definitely that's the reason we tell our patients don't eat Chinese from outside, because it has a Ajinomoto, because वो बच्चे को जाएगा. Eat iron and calcium, because वो आपकी bone से iron and calcium चला जाएगा. So definitely what you're eating is going to the baby, but not like that कि अगर पिज़्ज़ा खाया तो पूरा पिज़्ज़ा बच्चे के पास चला गया. No. But then obviously पिज़्ज़ा आपने खाया तो वो आपका जो carbs जो आपके अंदर जा रहा है वो आपको ज़्यादा कर रहा है और बेबी को न्यूट्रिशन कम दे रहा है. And when I'm breastfeeding, if I eat spicy food, my baby will get acidity. No, your baby will not get acidity because you ate spicy food. उसका भी एक digestive process है. जैसे आपका digestion takes some time, उसको भी बीच में colicky pains होंगी, because उसका जो stomach है और intestines है वो अभी they are adapting to the new kind of feed. उससे पहले उनको liquids में पानी के through जा रहा था, whatever nutrition you were giving, और through blood जा रहा था. So this is a new form of feeding that they have also started. तो उनको बीच बीच में they can have acidity, gastritis, but not because you ate spicy food. Spinal anesthesia is equal to backache for life. So that is one myth I've heard a lot. I've heard a lot कि back में injection लगा था उसकी वजह से backache हो रही है. You have to understand backache आपको back में वो इतने पतले injection से नहीं हुआ है, इसलिए because you had a bad posture, especially feeding the baby. आपको झुक के feed कराना है, आप उसको इतना झुक के कर रहे हो, आपकी back has not been supported properly,
यू हैव नॉट बीन डूइंग बैक एक्सरसाइजेज उससे पहले, प्लस द वेट ऑफ जो आपका इतना वेट गेन हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विल टेक अ टॉल ऑन यू, एंड वो आपको बैक एक उसकी वजह से हो रहा है. यू नीड टू कीप ऑन टेकिंग योर कैल्शियम सप्लीमेंटेशंस एंड अपनी बैक को सपोर्ट देके रखना है. इट्स नॉट द स्पाइनल एनेस्थीसिया, नॉर्मल डिलीवरी वाले पेशेंट्स को भी बैक एक होता है, एंड वो बैक एक में होता क्या है आफ्टर डिलीवरी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द पेशेंट इज वेरी कॉशियस. तब तक उसको ये रियलाइजेशन होती है कि जो मैं खा पी रही हूँ मैं खाऊंगी भी होंगी तो बच्चे को जाएगा, सो आई विल टेक माई आयरन एंड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन. आफ्टर डिलीवरी वो अपने आप को तो बिल्कुल ही भूल जाती है. सो देर यूल फाइंड पेशेंट्स बोलेंगे मैं अभी इतना आई एम नॉट वेरी फ्रीक्वेंट विद माई आयरन एंड कैल्शियम, स्पेशली बिकॉज यू हैव टू टेक एटलीस्ट फॉर 6 months पोस्ट डिलीवरी, बिकॉज आपकी एक्सक्लूसिव फीड पे जब तक बच्चा है दैट मीन्स वो आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन ले जा रहा है. सो इफ यू आर नॉट रिप्लेनिशिंग योर न्यूट्रिशन, डेफिनेटली आपका कैल्शियम लो होगा, आपको बैकएक होगी, तो वो आपको बैकएक जो है वो बाद में भी चलेगी. बट देन यू हैव वन थिंग टू से टू अदर पीपल, मेरे को इंजेक्शन लगा था उसकी वजह से बैकएक हो रही है. सो यू विल नॉट ब्लेम योरसेल्फ ना, यू विल ब्लेम द स्पाइनल एनेस्थीसिया. Beauty treatment hair colors not allowed. So beauty treatment hair colors not allowed if they are actually touching the roots of your hair, or if they can penetrate through your skin. Definitely they are not allowed, because we don't know the chemicals which are going inside your skin, because it will get absorbed. But if you are doing a hair color जहाँ पे आपका roots पे नहीं जा रहा है, you can do it. You can very well do it, and you can go for some healthy ones also. If you find that. So any questions that you feel like you want to ask me more? One question I wanted to discuss one myth also, as I was telling earlier, कि घी खाने से लास्ट में बेबी की नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है. That's the biggest myth. It was initially क्या होता था कि फीमेल्स जो होती थी फील्ड में काम करती थी, there used to be lot of physical work, they were not given adequate nutrition. So ये प्रेगनेंसी ये टाइम था जिस टाइम पे उनको लास्ट में वो दूध में घी डाल के देते थे ताकि उनके अंदर स्ट्रेंथ आए टू हैव अ नॉर्मल डिलीवरी. बट अभी आजकल में योर प्रेगनेंसी हैज बीन कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड, यू हैव बीन गिवन प्रॉपर सप्लीमेंट्स, सो यू डोंट नीड दैट. इनफैक्ट अब लास्ट में जब आपको लेते हो, आई हैव सीन एकदम बीपी राइज होने लग जाता है पेशेंट का, बिकॉज इतना ज्यादा फैट में जा रहा है. इट्स डेफिनेटली गोइंग टू क्लॉग योर आर्टरीज, इट्स गोइंग टू टेक अ टोल ऑन योर हार्ट. So you have to understand this ghee is not going to help you, but definitely proteins are going to help you. So you need to increase your protein intake during pregnancy, which is important. So one can continue to exercises post conceiving. Yes, except for few exercises, you can continue doing exercises. Like as I was mentioning earlier, you can do your own yoga, you can go for walks, and in fact आप jogging भी कर सकते हैं. आराम से धीरे धीरे थोड़ा सा jogging कर सकते हो, and आप अपनी arms की exercises कीजिए. बस abdominal exercises आपने avoid करनी है. legs की भी थोड़ी बहुत आप exercises कर सकते हैं. Yes, in moderation you can do exercises. In fact, it's beneficial. People say eating brinjal can darken the complexion of baby, and in same manner having oranges helps in lighter complexion. I would say have oranges, have apples, have pomegranates, because definitely it's going to increase your roughage. And oranges or no oranges, it is definitely going to increase. It's rich in vitamin C, so it will increase your iron absorption. So definitely you will definitely glow. I don't know about the baby. That will depend later on. And about brinjal, I haven't heard about that. My wife doesn't like eating because of fear of puking, and she's not understanding due to which she's getting weak, and she can't stand for 90 minutes or so. Okay, so the fear of puking, I can definitely understand. If there is a fear of puking, you feel like I don't want to take anything, but you have to remember this is the vicious cycle. You will not take anything, उससे और एसिडिटी होगा, एसिडिटी से फिर प्यूकिंग होगा, प्यूकिंग से फिर आपके अंदर वो फियर आ रहा है. सो इफ टू वांट टू ब्रेक दैट साइकिल, यू नीड टू ईट. इवन इफ आपका खाने के बाद में आपको लगे कि मेरा सारा निकल गया, 1/3 विल डेफिनेटली स्टे इन योर बॉडी. Start eating, and if you're not able to eat after that also, please consult your doctor, and she will give you some antiemetics and some medicines which will help you for that. But if you're not eating, definitely you're not
being nourished properly, and this is going to make you feel weak, and आपके साथ साथ में बेबी भी जो है उसकी ग्रोथ पे भी इफेक्ट आना शुरू होगा. So you need to remember that. What is the ideal cervix size for delivery, and should a person do prenatal exercise if it's on a lower side? I'm not able to understand the question, but I think you basically want to know is okay, what is the cervical length? Cervical length for delivery. Cervical length usually before delivery should be more than 3. 3 से ऊपर होना चाहिए. Less than 2.5 हो जाए, then definitely you are more prone for preterm labors. And if a patient has it on a lower side, then she has to avoid few exercises because we don't want कि उसका इतना low क्यों हो रहा है. And in some cases second trimester से अगर कम होना शुरू हो जाए, we might need to put a stitch also in such patients, and such patients are a candidate for a bed rest. Is breathlessness is common in pregnancy, and why does that happen? So breathlessness is common in pregnancy. Why? Because pregnancy itself is a relaxing condition. So last month में तो last trimester में तो I think you can understand very well कि जैसे जैसे the pregnancy is moving on, stomach की capacity बिल्कुल रही रही है, उसके पास जगह ही नहीं है, because the uterus is taking all the abdominal space. Stomach कहाँ जाएगा? It will go into lungs, ऊपर push हो जाएगा. ऊपर push हो जाएगा तो आपको breathlessness होगी, आपको breathing नहीं हो रही. But it is there in first and second trimester also. Why? Because pregnancy is a relaxing condition. उसमें क्या होता है कि the progesterone hormone वो एक ऑक्सीजन का ऐसा स्टेज क्रिएट कर देता है जिसमें आपको ये फीलिंग आती है कि मुझे सांस नहीं आ रहा. सो जब हमें नहीं सांस आता, व्हाट डू वी यूजुअली डू? वी स्टार्ट ब्रीदिंग फास्ट, है ना. हम अपना थोड़ा सा ब्रीदिंग को और तेज कर देते हैं ताकि हमारा ब्रेथलेसनेस कवर अप हो जाए, पर वो नहीं होता बिकॉज वो इट क्रिएट्स मोर ऑफ ऑक्सीजन डिप्राइवेशन. सो इन दैट केस जब भी आपको लगे कि आप ब्रेथलेस हो, तो आपने उस टाइम पे डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा लंबा सांस लेना है, तो ऑक्सीजन विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल लेवल एंड यू विल बी फाइन. Why is calcium and iron important in pregnancy, entire pregnancy process? So calcium and iron are important because iron is required for your hemoglobin, and जैसे जैसे आपका pregnancy में blood volume increase हो रहा है, your blood is getting dilutional, उसमें पानी ज़्यादा हो रहा है, so आपका hemoglobin is falling down. Plus iron is required for baby also. So iron is required for that. Calcium is required for the bones of baby. आपकी bones को support चाहिए during labor. Calcium और भी I would say जो biochemical levels होते हैं उसमें एक mediator होता है. So not only calcium, iron, magnesium, zinc, all are required. And in fact you might not have noticed आपकी calcium tablets में कईयों में magnesium added भी होता है. So because there are micro quantities which are required that are easily covered up by your diet also. So but calcium and iron forms a major part, so that's the reason you need supplementation from outside. Babies stop moving just before you go into labor. No, they don't stop moving, you stop feeling, because आपकी labor pains इतनी strong हो रही हैं, वो कैसे movement बंद कर देगा? वो तो अपना अंदर है movement पे, पर आपको contractions इतनी हो रही है कि वो भी फिक्स हो रहा है, उसको भी फिक्स होएगा तो वो नीचे आएगा. बट ऐसा नहीं है कि उसकी मूवमेंट्स ही बंद होगी, बट आपको उस पेन्स के साथ में यू आर नॉट एबल टू डिसिफर कि मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा. Having an epidural increases your chances of cesarean section? No. Having an epidural does not increase your chances of cesarean section, but getting an epidural at the right time is the key for a normal delivery. आप बोलो मुझे बस हॉस्पिटल घुसते सार में एपिड्यूरल लगा दो और आपको पेन्स अभी शुरू नहीं हुए, देन ऑब्वियसली जो पेन्स शुरू ही नहीं हुए तो आइडियल हो सकता है आप वैसे ही सिजेरियन में लैंड कर जाते हैं बिकॉज आपको पेन्स ही नहीं शुरू हुए. सो उसमें एपिड्यूरल का रीजन नहीं है. बट इफ यू गेट एन एपिड्यूरल ड्यूरिंग योर एक्टिव फेज ऑफ लेबर, द स्टडीज हैव शोन एपिड्यूरल हैज एक्चुअली डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ डिलीवरी. आप जल्दी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है अगर सही टाइम पे एपिड्यूरल लगाओ, बिकॉज there are two things. एक तो पेशेंट की पेन गेट्स एलेड ऑलमोस्ट आई वुड से 60 to 70%, उसको रिलीफ हो जाता है पेन से. प्लस बिकॉज उसकी पेन चली जाती है, योर गायनेकोलॉजिस्ट विल बी एबल टू इंक्रीज योर
pain medicines so that you deliver faster and smoothly. But there is another advantage of epidural also. If you by chance land up in a cesarean section with a epidural, that epidural can be converted from एनाल्जेसिया. एनाल्जेसिया इज पेन के लिए एंड एनेस्थीसिया इज आपको पूरा वो कर दिया, नम कर दिया. तो वो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया से एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में भी कन्वर्ट हो सकता है. यू डोंट नीड अनदर इंजेक्शन स्पाइनल वाला उसके लिए, उसी से हो जाएगा. सो आई वुड से एपिड्यूरल अगर सही टाइम पे लगे तो इट्स अ विन विन सिचुएशन. Please suggest the best way to reduce weight after delivery. You'll get plenty of time. You don't need to really worry that much about losing weight. Once you start feeding से भी calories burn होती हैं, उससे भी बहुत लोगों का weight loss हो जाता है. And once your baby is weaned off and वो अपनी और feed पे आ गया है and is not on your feed, then definitely there are methods by which you can reduce weight. You can do a diet restriction. You can start doing exercises. If it's a normal delivery, after 2 months, you can start doing all kind of exercises. If it's a cesarean, then after 6 months, you can start doing other exercises which involve abdominal exercises. But otherwise, even after 2 months of your cesarean, you can do all the activities except the abdominal exercises. So there is not like a thing that you will not be able to reduce weight. It's your willpower which is going to take you. Why there is sudden stretch kind of feeling near stomach area? So stretch kind of a feel during near stomach area is usually because of the bloating, and bloating is because digestion process is slow down. आपका नॉर्मल फूड जो 2-3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता था, अब उसको 5-6 घंटे लगती है सेम फूड को डाइजेस्ट होने में. सो आपको एक हैवीनेस और एक स्ट्रेचिंग फीलिंग देगा जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होगा. तो इसलिए वो आपको अपर एब्डोमेन में वैसी फीलिंग दे रहा है. I think we have covered up all the questions. So if there are any other, we can discuss in our next FB Live. Otherwise, I have basically tried to cover up all the myths so that you should have a clear mind in what to do and what to avoid, and to not go by the, I would say, this media hype and the gimmicks that they keep on playing कि ये लेने से ये हो जाएगा और उससे ये फर्क पड़ रहा है. Just eat healthy, keep your mind and body physically and mentally strong, because it's a beautiful journey. But अगर आप उसको इतना stressed out लोगे ना कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या, तो आपको अभी भी नहीं पता if you're walking on a road also. So just enjoy the journey. This is the most beautiful journey you're going through. You're going to feel after 4th-5th month पे आपको बेबी की किक्स फील होनी शुरू होंगी. So enjoy every part of it, and जो आपको problems लगती है, please discuss with your gynecologist, because this is the time period, it's a 9-month time period that you should start building a trust relationship with your gynecologist. That's very important. Thank you so much.